Dear friends, Namaste. Hoy aprendemos la técnica correcta de respiración pranayam. Pranayam es la técnica para limpiar nuestro sistema con la ayuda de la respiración. Comenzaremos con Bhastrika. Bhastrika es la técnica para exhalar la respiración con fuerza por la nariz. Recuerde que si tiene problemas cardíacos, no lo practice. Sí, por favor, nos ayuda a limpiar tus pulmones y a tomar más oxígeno. Ahora les muestro la técnica. El menos 5 minutos. Okay, friends. Today we will learn the right technique of breathing, which is called the pranayam. Pranayam is the technique for cleaning our system with the help of the breathing. Yes, as you know that we will start with the Bhastrika. Bhastrika is the technique to exhale breath forcefully by nose. By nose. And you must remember that if you have any heart complications, please don't practice it. Yes, please. Bhastrika helps us cleaning our lungs and taking more oxygen. Okay, now I will show you the technique and please practice at least 5 minutes. देखो दोस्तों, हिंदी भाषा के लोग जानते ही हैं कि प्राणायाम है। प्राणायाम की जो पहली टेक्निक है वो भस्त्रिका है और भस्त्रिका को हम सीख रहे हैं, ठीक है। और भस्त्रिका को सीखने के लिए हमें इसमें नाक से जोर से बाहर सांस फेंकना है। ओके, नाउ आई शो यू। ओके, यू मस्ट रिमेंबर दैट इफ यू हैव द हार्ट कॉम्प्लिकेशंस, अगर किसी भी तरह की आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो प्लीज डोंट डू इट, और यू कैन डू इट वेरी सिंपली, but not forcefully. You must remember that. Let me repeat again that you will inhale the breath and you will throw by nose forcefully. Yes, it must be forcefully. I repeat. It always done in a standing position better way. खड़े होके इस टेक्निक को और ज्यादा अच्छे ढंग से किया जा सकता है। इसको धीरे धीरे शुरू कीजिएगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। यस, you must increase your time gradually, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, and take it up to 5 minutes. Okay, at least 5 minutes. It will help to clean our lungs. Okay, all will go out. Okay, और जो हमारे फुसफुस हैं वो ओपन होंगे। Means we will able to inhale more breath if we are able to exhale it more. So our whole concentration must be on throwing out. Okay. You can do forcefully if you are healthy one. Remember, healthy one. Okay. Now we will proceed
towards the second technique. Second technique is called Kapalbhati. Let me explain in Spanish also. La segunda técnica es Kapalbhati. Aceleremos con fresael eliente por la nariz y el mismo tiempo apretaremos la barriga. Equindo iere y apartando el ventre. Remember this one. Apartando el ventre. Okay. Equendo ere y apartando el vientre profundamente. Okay, I repeat. Econdo e y apartando el vientre profundamente. Nos da muchos beneficios. Nos ayuda a limpiar nuestro tubo de respiración. Y lo más importante, cura todas las enfermedades de nuestro estómago y sistema digestivo. Sí, sistema digestivo. Todos nuestros órganos digestivos se ejercitan. El yoga y el ayurveda dicen que todas las enfermedades surgen del mal funcionamiento de nuestros órganos digestivos. Por lo que esta técnica nos ayuda a curar nuestro sistema digestivo en menos 5 minutos. Second technique is Kapalbhati. In this, we exhale our breath forcefully by nose. Remember, by nose. And at the same time, we will squeeze our belly fully, throwing out the breath and squeezing the belly deeply. It gives us many benefits. It helps us in cleaning our breathing pipe, and most importantly, it cures all the disease of our stomach and digestive system. And by this technique, all our digestive organs, whole belly and stomach, get exercised. You must know that Ayurveda and yoga say that all disease arise from the malfunction of our digestive organs. So this technique help us in curing our digestive system, and friends, at least 5 minutes. Okay. हिंदी भाषी वाले दोस्तों कपालभाति करेंगे। कपालभाति में नाक से सांस बाहर फेंकेंगे और सेम टाइम में अपने पेट को, अपनी बेली को स्क्वीज करेंगे। सांस बाहर फेंकेंगे, बेली को स्क्वीज करेंगे। ये बहुत से बेनिफिट्स देती है, हमारी ब्रीदिंग लाइन को, पाइप को साफ करती है और इसके अलावा हमारी पेट की सारी एक्सरसाइज हो जाती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की हो जाती है। हमारे इसमें योगा में और आयुर्वेद में बार बार कहा गया है कि सारी बीमारियों की जो जड़ है वो पेट होती है। तो इस टेक्निक से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्योर होगा। ओके, एंड most importantly, you must also remember that we will do at least 5 minutes. So now I show you the technique. Kapal Bhati. Okay, I make it more clear for you. You see, this way. You see,
in the side pose also. It must go deeper, fully deep. Most of the people do this way, and they take time from first to second. Means generally people do. No, 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 no. If really you want to get benefit of it, do it continuously and forcefully and deeply. Means you see, stomach must go deep, deeper than ribs. Fully, whole stomach. I think it is clear to you. From the first position, front position, you can see again. सामने से फिर देख लो. मैं रिपीटेडली कह रहा हूं कि बीच में गैप नहीं होना चाहिए. ये जनरली लोगों का गैप होता है. जनरली लोग करते हैं. No, no. Okay, in the beginning you cannot do speedily, but you must do speedily little by practice. Fully. Bhai Sahab must go inside. Okay. By this, you will get exercised your stomach, all the organs, your pancreas, your intestines, both intestines, your stomach, your kidney, your liver, all. In another way, I would like to say that, you see, we get the massage. Okay. But we don't have any way to go in and massage. So when we are doing, these all organs are getting massaged. They are getting activated. And by this technique, all the system, digestive system, get cured. All constipation, okay, piles, yeah, blood sugar, extra fluid, whatever you think, it may cure if it is done properly. And when I am saying properly, I am repeat it again, do it continuously. Don't have a gap between the two Kapalabhatis. Let me show again for 1 minute. You will able to understand. Deeper, deeper. Or if you will do it totally, you will get cured for all the sickness. It may be something, okay, stones, whatever, you will get cured. Yes. Okay. Another thing also, if we take it as a meditation, these techniques help us in balancing the three chakras: Mooladhara, base centra, second centra, and third centra. Yes, most of the people are confused where is the second and third chakras. First chakra is between our private parts. Second chakra, let me show exactly location. It is around here. Okay.
But don't be get confused. You can take at your level, but try to feel it. And by this technique, all the fat, you see, in this is this also I don't have the so much fat. Even whole day I am sitting. Okay. So second chakra, third chakra. You see this our ribs finish. It is around here. If you have pain here, that also it means that your third chakra is imbalanced. Okay. So this Kapal Bhati may help spiritually also in three chakras. हाँ दोस्तों, हिंदी में ही बता देता हूँ कि देखिए कपाल भाती को अगर हमने सही ढंग से किया, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, तो आपके तीनों के तीनों चक्रास जो हैं वो क्योर हो जाएंगे। और तीनों चक्रों को मैंने बता दिया, हिंदी में फिर बता देता हूँ। पहला मूलाधार के पास, मूलाधार है जो प्राइवेट पार्ट्स के बीच में है, दूसरा यहाँ पे है और तीसरा यहाँ पे है, जिसको हम हिंदी में कलेजा कहते हैं। ओके, सो be healthy yaar, stay healthy yaar. By this your immune system will also increase. Okay, now we will proceed for the third technique. Okay, I repeat it in Spanish first. La tercera técnica es alom vilom. Sabes que tenemos two partes de nuestro cerebro, la izquierda y la derecha. Esta técnica nos ayuda a suministrar el oxígeno adecuado en ambos lados del cerebro. En esta técnica respiramos por la fosa nasal izquierda y exhalamos por la fosa nasal derecha. Ok, ahora tomamos por la derecha y exhalamos por la izquierda y luego tomamos nuevamente por la izquierda. L menos 5 minutes. Third technique is called alom vilom. You know that we have the two parts of our brain. Okay, left hemispheres, right hemispheres. Okay, this technique help us to get proper supply of oxygen in both sides of our brain. Okay, in this technique we take breath from left nostril. Yeah, put your thumb here and take from the left. Now put these fingers here and exhale the right nostril. Stop for a few seconds. Then take from the right. Means you exhale from the right and take again from right. And now put your thumb again here and exhale from the left. Then take from the left. Okay. तो अलोम विलोम की हम इसमें बात कर रहे हैं। अलोम विलोम की जहां तक बात है दोस्तों, आपको पता ही है अलोम विलोम में हम क्या करते हैं। अलोम विलोम में हम लेफ्ट नॉस्ट्रियल से बाएं उससे सांस लेते हैं। जब बाएं से लेते हैं तो वो राइट साइड के हमारे ब्रेन सिस्टम को एक्टिव करता है। फिर हम उसको राइट से छोड़ते हैं। राइट से छोड़ने के बाद फिर उसको राइट से ही वापस लेते हैं और लेफ्ट से छोड़ते हैं। जब हम लेफ्ट से लेते हैं तो हमारे राइट साइड के ब्रेन को ऑक्सीजन देता है, और जब हम राइट से लेते हैं तो ये हमारे लेफ्ट को देता है। ओके, नाउ आई शो यू प्रॉपरली, प्लीज पे अटेंशन। ओके, put your thumb here
Yes, this way. And now inhale from the left. Yes, fill your lungs. Now exhale from the right. Empty all the system throughout all. Okay? Stop for a while. Don't forcefully, easily. Then inhale, take from the right and take from the right and left from left. Okay? Okay? I repeat it again. Start from the left, by the left. Put your on the right. Inhale from the left. Fill your lungs as much as you can easily. Then exhale from the right. Stop for a while. Then take again from the right. Stop for a while. Put thumb again here. Or you can put finger. That finger, this is not the issue. Exhale from the left. Then again from the left. Okay. Then now I show you without speaking. Okay. So simple. At least 5 minutes. You can do all these three techniques anytime. I am not saying about so-called yogacharyas like them can do only on the morning. Just be careful that your stomach is empty or you have taken food at least 3 hours before. अगर आपको 3 घंटे हो गए हैं भोजन लिए तो आप इसको किसी भी समय कर सकते हैं. Okay. There are many other techniques also. If I will try to complete, it will be so lengthy video. Okay. So I hope you have understood. Or you can, yaar, anytime. Aussie is always available. Okay. Stay healthy. Stay fit. स्वस्थ रहो. मारो कपाल बाती. रहो हेल्दी. मेरे की तरह बुढ़ापे में भी. ओके. किसी योगाचार्य की बपोती नहीं है हेल्दी रहना. के लुंगी और नंगे बदन ही रहना है. किसी भी आया में ढीले कपड़े पहन लो बस. ओके. You can do in any cloth. Okay. Don't put monkey on mantra. वो कहावत है ना कि मंत्र के साथ बंदर लगा दिया. कोई गंभीर मामला नहीं है दोस्तों. बहुत इजी सा मामला है. También hay algunas otras técnicas que compartiré en el próximo video. Por favor, pruebe estas técnicas y
Mantegas saludable. C. Pude contractnos en culicure mediante en nuestra identificación de curo electrónico o número de teléfono. Subscribe el channel. Gracias y mucha cierto. ठीक है दोस्तों. अरे हेल्दी रहो ना यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा. कपालभाति करो. अगर डायनेमिक नहीं कर पा रहे हो तो करो ना. और जी, yes, be healthy and everything will be perfect. Healthy body has a healthy mind, vice versa also. So whatever I am showing you, the basic purpose is your complete development, spiritually, physically. When our both things are fit, finance will come. Okay, friends. Thank you. Thank you. You can call me. You have my phone number. You can WhatsApp me. You can email me anytime. Or subscribe कीजिएगा. Please subscribe it. Because if this channel start paying, it will go all in charity. I can assure you. Thank you. Thank you. Namaste, 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 and be happy. Okay? Thank you.